Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. So today we'll start again from parental products. Actually, yesterday we was discussing about this, but yesterday due to the technical issue, that is a electricity was cut off, so that's why we was not able to see the whole chapter. So today we'll try to complete this. If again electricity or if again environment permit us, कल यहाँ पे थोड़ा बारिश वगैरह या फिर अवकाली बारिश की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा कल बारिश का इशू था, लाइट का भी इशू हो गया, लाइट चला गया था बाद में। तो आज भी कुछ ऐसे ही आसार नज़र आ रहे, बट देखते हैं अभी जहाँ पे बंद होगा वहाँ पे बंद होगा, क्या करेंगे उसमें। सो टुडे आई विल अगेन ट्राई टू इलेबोरेट यू the parental products. You can expect at least 2 or 3 questions from this chapter. This chapter is important again from industrial pharmacy or GPAT Niper DI Pharmacist. And if you have seen the paper of NEET 12 का जो NEET का पेपर है, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है अपने जीपैट में भी आ सकते हैं, जैसे पर्टिकुलरली क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री, क्वेश्चंस ऑफ जूलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, वो क्वेश्चंस आपको भी आ सकते हैं। थोड़ा सा नीट का पेपर भी देखते जाओ आप, क्योंकि वहाँ से ऑनलाइन में क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको एक बार। केमिस्ट्री के क्वेश्चन तो आते ही आते, जैसे लास्ट ईयर में नीट में जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे वो जीपैट में भी एक आध क्वेश्चन उसी तरीके से आता है, ये तो केमिस्ट्री के वो कवर करते हैं। So what do you mean by parenteral products? So the name parenteral indicate two words, para and enteral. Enteral means intestine and para means other than intestine. Para means other and enteral matlab enteron or intestine. Those drugs which are given by intestinal route known as enteral route, or those are given by other routes known as parenteral routes, है ना। जो भी ड्रग इंटेस्टाइन की वजह दूसरे कहाँ से भी दिया जाता है, जैसे है ना, बक्कल हो गया या फिर आपका सबलिंगुअल हो गया या फिर इनहेलेशन या फिर ऑल इंजेक्शंस, ऑल दे आर पेरेंटल रूट्स। बट नाउ पेरेंटल रूट का मतलब वो होता है, लेकिन रफली वी यूज्ड टू से इंजेक्टेबल रूट, ठीक है। तो दिस इज एपिडर्मिस, आउटर लेयर ऑफ योर स्किन, आफ्टर दैट देयर इज डर्मिस, आफ्टर दैट सबक्यूटेनियस लेयर और टिश्यू, adipose tissue, then muscle and veins are there. So what do you mean by intramuscular injection? Intramuscular injection is injection is given into the muscle. Intravenous injection means injection is given to the veins. Subcutaneous injection means below the skin. Intradermal injection means in the layers of skin. Intraperitoneal injection means directly into the stomach. Intra-arterial injection means directly into the artery. Intracardiac injection means directly into the heart. Intrapleural means directly into the pleural cavity of lungs, right? Intrathecal means into the subarachnoid space of your spinal cord. Different type of injections are there, we have already seen in the pharmacology also. So here again you can we will revise it here. Different route of you know, then volume of injection or volume of formulation that can be given, then types of medication, and then formulation consideration. So first one is a primary parenteral route. पहला है अपना primary parenteral route. Good evening, okay.
So small volume parenterals means what? Small volume parenterals means in which the volume of formulation is less, say less than 50 ml. 1 to 50 ml, you can say small volume parenterals. Large volume parenterals 50 to 1000 ml या फिर several liters भी हो सकते हैं. So large volume parenterals means more than 100 ml. Small volume parenteral means less than 100 ml, less than 50 ml. Small volume parenterals, first one is subcutaneous. Volume of injection that can be given by subcutaneous route is nothing but the 0.5 to 2 ml. Insulin vaccines, they are given by insulins vaccines, they are given by subcutaneous route. Then intramuscular route and intramuscular route. So intramuscular route, volume of injection is a 0.5 to 2 ml. Nearly all type of drug given by intramuscular route, and it can be either solution emulsion, and must be isotonic with the blood plasma. Large volume parenterals, obviously large volume है, so in the large volume parenterals 1 to 1000 ml. Okay? More than 100 ml, they are known as infusion fluids. Now, large volume parenterals, it may be either 1 ml to 1000 ml. Nearly all kind of drugs they are given, and here again solutions and some emulsions, micro emulsions can be given by intravenous route. Other parenteral route is a intra-arterial route, directly into artery. The injection is given directly into the artery. 2 to 20 ml of injection that can be given, mostly used for the radio-opaque media and anti-cancer drugs and antibiotics. Solutions and some emulsion that can be injected into the artery. Next होता है intrathecal. ओके, तो इसमें तो ये इंट्रास्पाइनल होता है एक, और ये इंट्रापेरिडियोल होता है. इंट्रास्पाइनली यू कैन इंजेक्ट 1 to 4 ml. इंट्रा है ना, इंट्रापेरिडियोल यू कैन इंजेक्ट अराउंड 6 to 30 ml. मतलब इंट्राथिकली 6 to 30 ml. तो लोकल एनेस्थेटिक्स, एनाल्जेसिक्स है ना, न्यूरोलाइटिक, अल्फा 2 agonist steroids must be isotonic again, they are given. Then intracisternal means directly into the caudal region of the brain between cerebellum and medulla oblongata. तो उसका कुछ एग्जांपल्स है ही नहीं यहाँ पे. Then intra-articular means drug is directly injected into the synovial cavity for their anti-inflammatory activity. So 2 to 20 ml that can be given. Mostly analgesic drug, morphine, local anesthetic, steroids, NSAIDs, they are given by intra-articular route. Then intracardial, directly into the heart. Mostly cardiotonic drug दिए जाते हैं, say noradrenaline, epinephrine, etc. Epinephrine means adrenaline, norepinephrine means noradrenaline. Intradural, lungs में दिया जाता है, directly into the lungs, so 2 to 30 ml. Local anesthetic, narcotic, chemotherapeutic means anti-cancer drugs. Diagnostic agent intradermally देते हैं 0.5 ml. Should be isotonic again. ये सभी isotonic होना चाहिए. So all preparation meant for injection should be isotonic with the blood plasma. There is a जैसे 0.9% sodium chloride is isotonic with the blood plasma. Now they are the dosage form that are free from any viable form of microorganism. Sterile products are the dosage form that are free from any viable form of microorganism. कोई भी जिंदा, viable मतलब जिंदा, should be free from any viable form of microorganism. They are either product like parentrals, ophthalmic and irrigating solution. Parentrals, ophthalmic मतलब preparation used in the eyes, and irrigating solutions. They, because they are
circumventing your फर्स्ट लाइन डिफेंस ऑफ बॉडी। तो आप इंजेक्शन डायरेक्टली एक मसल में दे रहे हो, सबक्यूटेनियस टिश्यू में दे, या फिर इंट्रा है ना, इंट्रावेनस दे रहे हो, तो यू आर बाईपासिंग द फर्स्ट लाइन डिफेंस। फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है आपका बॉडी का स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो यू आर bypassing the first line defense of body. Therefore these preparations should be free from any microbial contamination and toxic component, and should have high purity, should have high level of purity. Parenteral preparation may be given in by various routes like intravenous route, intramuscular route, intramuscular, intraspinal, subcutaneous, intradermal. तो ये आपने ऑलरेडी देखा है। So remember, bioavailability is 100% when drug is given by intravenous route, because you are directly injecting drug into circulation, systemic circulation, and no absorption is there. Okay, directly drug will be in a circulation. 100% bioavailability. Intravenous, intraspinal preparation are rarely given as a non-aqueous. जो intraspinal intravenous इंजेक्शन है वो मोस्टली क्या होते हैं, सोल्यूशंस ही होते हैं, बट कभी कभी नॉन एक्वियस हो भी सकते हैं, जैसे माइक्रो इमल्शन वगैरह हो गया। टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन में माइक्रो इमल्शन वगैरह हो गया। प्रिपरेशन गिवन बाय इंट्रामस्कुलर रूट और सबक्यूटेनियस और इंट्राडर्मल रूट, दे कैन बी आइदर solution or suspension or emulsion. Even some solids, they can be transplanted in a subcutaneous tissue for longer action or in a muscle also. तो एक्सिपिएंट यूज्ड इन द पैरेंटल प्रोडक्ट है ना, जैसे टैबलेट में होता है आपका ग्लाइडेंट है आपका टैबलेट में, या फिर टैबलेट में आपका ना, तो यू आर यूजिंग कलरेंट, यू आर यूजिंग डाइलुएंट है ना इन टैबलेट। Likewise, your tablet and capsule dosage forms parenteral products also needs a excipient. Excipient means what? So these are the other than active pharmaceutical ingredient. They are included for the various purposes. So in the parenteral products, so you have antimicrobial preservatives. Antimicrobial preservative only added in the small वॉल्यूम पैरेंटल्स। जो एंटीमाइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव होता है, दे आर ओनली एडेड इन अ स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटल्स, नॉट इन अ लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स एंड नॉट इन अ सिंगल डोज कंटेनर। जो एंटीमाइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव या एंटीमाइक्रोबियल एजेंट होता है, ओनली एडेड इन अ स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटल्स लाइक एम्प्यूल्स, लाइक वायल्स। वाइल्स में ऐड कर दिया किया जाता है, एम्पुल्स में, एम्पुल्स तो सिंगल डोज कंटेनर होता है ना, तो एंटीमाइक्रोबियल और प्रिजर्वेटिव इज ओनली एडेड इन अ स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटल्स लाइक वाइल्स। तो जो वाइल्स होते हैं उसमें रिपीटेडली आपको इंजेक्शन निकालना पड़ता है। जैसे डाइक्लोफेनेक वायल है, मान लीजिए डाइक्लोफेनेक वायल 30 ml का वायल है, इन द वायल यू आर विड्रॉइंग द इंजेक्शन repeatedly, so there might be chance of contamination. So to prevent that, so antimicrobial agents are added. तो याद रखना है, antimicrobial agents or preservative, they are added in a small volume parenteral like a vials, not added in a large volume parentals or single dose container. Single dose container या फिर large volume parentals में नहीं ऐड करें। एग्जाम्पल क्या है इनके? तो बेंजाइल अल्कोहल, बेंजोनियम, बेंजोथोनियम क्लोराइड, ब्यूटाइल पैराबेन, क्लोरोबिटेनॉल, मेटाक्रिसॉल, मिथाइल पैराबेन है, मारिस्टिल गामा पिकोलिनियो है, फिनॉल, फिनाइल मर्क्यूरी नाइट्रेट, मिथाइल पैराबेन, थायोमर्साल। कल हमने इसके कॉन्सेंट्रेशन भी देखे थे, सो आई विल नॉट रिपीट कॉन्सेंट्रेशन, बट यहाँ पे याद रखना है कि मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है और फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन भी पूछा है।
एग्जाम में. After that, solubilizers, wetting agents, and emulsifiers. To increase the solubility of API, to suspend or to uh, make a emulsion, you need a solubilizers, wetting agents, and emulsifiers. So these are the example: diethyl acetamide, dioctyl sodium sulfosuccinate, euguol, ethyl alcohol, ethyl lactate, glycerin, lecithin, polyethylene glycol 40 solubilizer है, castor oil, polyethylene glycol 300, polysorbate है ना, polysorbate 80 40 20, povidone, polypropylene glycol sodium, deoxycholate sodium, sorbitan monopalmitate. These are the used as a solubilizer or wetting agents or emulsifier. The concentration is also given but not required. Now buffers are used for the adjustment of pH. No? Buffers are used to reduce the pH changes. Buffers are nothing but the weak acid and their salts. So they will reduce the pH upon addition of small amount of acid or base. So acetic acid, adipic acid, benzoic acid, sodium benzoate, citric lactic malic acid, potassium phosphate, sodium phosphate monobasic, dibasic, sodium acetate है, sodium bicarbonate है, sodium carbonate, sodium citrate, tartrate, tartric acid भी है. They are used as a buffer to maintain the pH and to maintain the pH, because pH अगर change हो गया तो you know that ionization change होता है, and pH is also one of the important criteria for stability. So it is very important to maintain the pH of the formulation, so that various buffer or buffering agents are used. Now bulking substances or tonicity modifier to enhance the bulk, to increase the bulkiness of the formulation and tonicity. तो ग्लिसरीन है आपका, ग्लिसरीन, then lactose, then mannitol is there, dextrose is there, sodium chloride is there. So it is used as a tonicity modifier, sodium chloride mostly. बाकी सब bulking agent है, sodium sulfate, sorbitol, suspending agents भी है, this is gelatin, methyl cellulose, pectin, polyethylene glycol वगैरह. They are known as a suspending agent, right? Chelating agent to prevent the free radicals or metals, metal ion जो होते हैं that can degrade the product, so that's why chelating agent are add किए जाते हैं. Sodium, so disodium EDTA, calcium disodium, tetrasodium EDTA. Local anesthetic to prevent the pain at a इंजेक्शन साइट. लोकल एनेस्थेटिक क्यों ऐड किया जाता है? टू प्रिवेंट द पेन एट इंजेक्शन साइट. तो प्रोकेन, हाइड्रोक्लोराइड एंड बेंजील अल्कोहल, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है. बेंजील अल्कोहल इज यूज्ड एज, बेंजील अल्कोहल इज यूज्ड द लोकल एनेस्थेटिक इन द फॉर्मुलेशन. स्टेबिलाइजर्स, क्रिएटिनिन, ग्लिसरीन, niacinamide, विटामिन B6, देन सोडियम एसिटिल है ना, सोडियम एसिटिल ट्रेप्टोफेनेट, सोडियम कैप्राइलेट, सोडियम सैकरिन, एक है स्वीटनर होता है. दीज आर यूज्ड एज स्टेबिलाइजर्स इन द पेरेंट्रल्स. तो सबसे पहले क्या है कि फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन. तो इंजेक्शन बनाना है आपको, तो ड्रग तो है, एपीआई है, उसके बाद में क्या लगेगा? व्हीकल लगेगा. तो व्हीकल, व्हाट इज व्हीकल? व्हीकल इज है ना, व्हाट इज व्हीकल? तो व्हीकल मीन्स द फेज कंटिन्यूस, अगेन. So either solid or water. So vehicle for injection, it may be either aqueous vehicle or non-aqueous vehicle. So aqueous vehicle मतलब क्या? Different type of waters. Non-aqueous vehicle मतलब क्या? Oily vehicle or water miscible. So aqueous vehicle is nothing but the water for injection, WFI, or sterile water for injection. ये दोनों vehicle है. Mostly sterile water for injection is used. Sterile water for injection is used. नॉन एक्वियस सॉल्वेंट में आता है आपका, नॉन एक्वियस सॉल्वेंट में आता है आपका वाटर मिसिबल सॉल्वेंट लाइक डायोक्सिन, है ना, डाइमिथाइल एस्टामाइड, एन मिथाइल लैक्टामाइड,
butylene glycol, polyethylene glycol, PG 600 800, glycerine, ethyl alcohol. Then water miscible solvent like water immiscible solvent like fixed oils. तो ये वाटर इमिसिबल सॉल्वेंट है. जैसे स्टेरॉइडल टेस्टोस्टेरोन वगैरह स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन क्या लिपिड सोल्यूबल होते हैं, तो स्टेरॉइड इंजेक्शन आर मेड इन द ऑयली व्हीकल, एंड ऑयली व्हीकल से जब इंजेक्शन बनाते हैं तो दैट विल गिव यू पेनफुल इंजेक्शन. सो वाटर इमिसिबल सॉल्वेंट और ऑयली व्हीकल्स दे आर है ना, they will create a pain at the injection site. जैसे fixed oil, aragus oil, ethyl oleate, isopropyl myristate, benzyl benzoate. Most commonly used non-aqueous solvent are nothing but the propylene glycol, है ना, polyethylene glycol and fixed oils. They are the non-aqueous solvents. Yeah. तो फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन फॉर पैरेंट्रल, पहला है व्हीकल. व्हीकल क्या यूज करेंगे, व्हीकल यूज करेंगे इधर आप एक्वियस व्हीकल और नॉन एक्वियस व्हीकल. फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन. सेकंड है आपका पायरोजन फ्री. व्हीकल मस्ट बी एंड योर प्रिपरेशन मस्ट बी पायरोजन फ्री. तो है ना, लाइट लाव रही है आई तो लाइट लावे. पेरेंट्रल प्रिपरेशन और व्हीकल मस्ट यूज फॉर आई लाइट लावे. So in the formulation parameter, first one is a vehicle, that may be either aqueous vehicle or non-aqueous vehicle. Second thing, the vehicle as well as your formulation should be pyrogen free. So what are the pyrogen? First, pyrogen क्या होते हैं? They will induce the fever. Parenteral preparation and vehicle must be pyrogen free. But what is meant by pyrogen? Pyrogens are the metabolic product of your bacteria. Pyrogens are the metabolic product of bacteria and they are chemically lipopolysaccharide. Chemically ये क्या होते हैं? Lipopolysaccharide होते हैं. Chemically they are the lipopolysaccharides. Chemically they are the lipopolysaccharide and they may be either peptide or lipopolysaccharide. Most of the time lipopolysaccharide होते हैं. ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म जो है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विल प्रोड्यूस मोस्ट पोटेंट टॉक्सिन्स नोन एज एंडोटॉक्सिन एंड दे इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, चिल द बॉडी, है ना, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना, ठंडा भी करते हैं बॉडी को, एंड कॉजेज क्यूटेनियस वासोकंस्ट्रिक्शन एंड इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर. तो पायरोजन क्या है? पायरोजन आर द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ योर बैक्टीरिया. दे मे बी आइदर प्रोटीन और lipopolysaccharide. Most of the time lipopolysaccharide होते हैं, but maybe either peptides. Right? So source of contamination is nothing but the water or contaminated solute and container. तो ये pyrogens कहाँ से आते हैं? Contaminated water or contaminated solutes or container. So source of pyrogen may be either container, vehicle or solute. और containers may be rendered pyrogen free. कंटेनर से पायरोजन कैसे हटाने का? कंटेनर में भी rendered pyrogen free. ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं 2-3 बार. कंटेनर में भी rendered pyrogen free by adequate cleaning and heating at 210 degrees Celsius for 3 hours. Heating at 210 degrees Celsius for 3-4 hours. तो जो GPAT 2019 में क्वेश्चन आ चुका है कि कंटेनर्स में बी रेंडर्ड पायरोजन फ्री बाय एडिक्वेटली क्लीनिंग एंड हीटिंग एट 210 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 to 4 hours.
और बाय हीटिंग 650 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 मिनट, है ना, और बाय हीटिंग कंटेनर एट a 650 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 मिनट. However, autoclaving temperature जो होता है आपको, नॉर्मल autoclaving temperature does not destroy the pyrogens during the normal cycle. Pyrogens can also be removed by adsorption method or by selective solvent extraction method. तो ये भी है, बट ये याद रखो आप, ठीक है. Now solute or drug, so that must be highly pure. जो ड्रग होता है आपका must be high purity and that should be free from contamination and microorganism. Solute or drug must be high pure drug and that should be free from contamination and microorganism. Now added substances, बाकी कौन से additives ऐड करते हैं, like solubility enhancers, antioxidants to prevent the deterioration or degradation, chelating agent for the same, buffers, tonicity modifiers, antibacterial agents, antifungal agent, hydrolysis inhibitors, anti-foaming agents, ये सब क्या है, एडिटिव्स, राइट. तो यहाँ पे और एक बार देखो, याद रखो, प्रिजर्वेटिव और एंटीबैक्टीरियल एजेंट इज नॉट एडेड इन अ सिंगल डोज कंटेनर एंड लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स. जो सिंगल डोज कंटेनर है, जैसे एम्प्यूल हो गए, और लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स जैसे आईवी फ्लूइड्स हो गए, उसमें प्रिजर्वेटिव और एंटीमाइक्रोबियल एजेंट नहीं ऐड करना है. स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल जैसे वायल्स होते, वायल्स में आप ऐड कर सकते हो, ओनली एडेड इन वायल्स और मल्टी डोज कंटेनर, राइट. तो एम्पुल्स, यू नो दैट एम्पुल्स कैसे होते हैं, दीज आर नोन एज एम्पुल्स. यहाँ पे देख लो आप, एम्पुल्स आर अ सिंगल डोज कंटेनर. तो क्यों ऐड करना है प्रिजर्वेटिव, दे आर टर्मिनली स्टरलाइज्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, दे आर द टर्मिनली स्टरलाइज्ड एंड पैक्ड. तो स्टरलाइजेशन पैक करने के बाद में स्टरलाइज किया जाता है, तो उसमें स्टरलिटी मेंटेन रहता है. एंड दूसरा चीज़, लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल में आप एंटीबैक्टीरियल एजेंट ऐड करने जाओगे तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा लगेगा. तो ये जैसे वायल है, वायल में से क्या है कि जैसे 20 ml है, 2 ml आपको इंजेक्शन करना है, तो यू हैव टू विड्रॉ मल्टीपल टाइम्स. दैट्स व्हाई देयर माइट बी चांसेस ऑफ कंटेमिनेशन. तो antibacterial preservative is added in a vials, not in a ampoules and large volume parentrals. Very very important, monograph of waters ना. तो ये चैप्टर जो है अपन जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, है ना. वैसे बुक में तो बहुत लेंथ दिया है. वाटर फॉर इंजेक्शन एंड स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, यूएसपी स्टैंडर्ड्स और मोनोग्राफ. यूएसपी मोनोग्राफ क्या है, तो what are the standards for water for injection and sterile water for injection, very very important. देखो pH है, पहला क्राइटेरिया है आपको pH. तो pH ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन एंड स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन कितना होना चाहिए, pH 5 to 7. pH ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन as well as sterile water for injection. pH for water for injection as well as sterile water for injection is a 5 to 7. Then second main important है conductivity, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी ऑलरेडी आ चुके हैं. कंडक्टिविटी क्यों चेक करना है, इट इज अ टेस्ट टू चेक द प्योरिटी ऑफ वाटर. इसका क्वेश्चन आ चुका है. कंडक्टिविटी इज यूज टू चेक द प्योरिटी ऑफ वाटर. कंडक्टिविटी इज यूज टू चेक द प्योरिटी ऑफ वाटर. कंडक्टिविटी टेस्ट जो है दैट इज यूज टू चेक द प्योरिटी ऑफ वाटर, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट एंड आयंस. अगर सॉल्ट है, आयन है, तो उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, तो एक लिमिट हो जाता है ना. तो कंडक्टिविटी ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन एंड स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन शुड बी 1.3 माइक्रो सेकंड पर सेंटीमीटर. 1.3 microsecond per centimeter. Conductivity should be 1.3 microsecond per second. Now it is used to check the purity of water
and it may be expressed on the scale of conductance, either a conductance और resistance दोनों भी आप कर सकते हो, and ionic content respectively. So it can be expressed as on a scale of conductance, resistance or ionic content respectively. जैसे not more than 1 micromole water for injection, not more than 1 micromole conductance, not more than 1 mega ohm resistance, which is equal to approximately 0.1 ppm सोडियम क्लोराइड का जितना कंडक्टेंस होता है जितना उतना होना चाहिए। कंडक्टिविटी आपको इतना याद रखो, कंडक्टिविटी इज अ प्योरिटी यूज्ड टू चेक द प्योरिटी ऑफ वाटर एंड इट शुड बी अराउंड 1.3 माइक्रोसेकंड पर सेंटीमीटर। देन सॉलिड कंटेंट, सॉलिड कंटेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है इसको। सॉलिड कंटेंट of water for injection as well as water for injection as well as sterile water for injection ना। तो WFI मतलब water for injection, yes WFI मतलब sterile water for injection। तो solid content is measured by evaporating the water for injection है ना at 104 degrees Celsius। so limit is nothing but the 10 ppm। solid content of water for injection is 10 ppm, but more solid content limit is permitted for sterile water for injection। solid content limit जो sterile water for injection का होता है ना, तो नॉर्मली तो sterile water for injection जब आएगा आपको होगा इसका कम होगा लिमिट, बट इसका ज़्यादा होता है। क्यों होता है ज़्यादा? बिकॉज it is a more solid content limit is permitted in case of sterile water for injection, because leaching of solid during sterilization है ना, leaching of solid during the sterilization of glass vessel, क्योंकि sterile water for injection जो है वाटर फॉर इंजेक्शन प्रिपेयर करने के बाद में उसको स्टरलाइज करते हैं। ड्यूरिंग द स्टरलाइजेशन प्रोसेस जो सॉलिड कंटेंट होता है ग्लास का वो लीक होता है और उसके कारण उसका सॉलिड कंटेंट लिमिट जो है वो ज़्यादा परमिट किया है 20 to 40 ppm। solid content limit of your water for injection is a 10 ppm। ठीक है। now endotoxin test limit है इनका, so it is a 0.25 endotoxin unit per ml, that is for sterile water for injection as well as water for injection, दोनों के लिए सेम ही है। तो कंडक्टिविटी सेम है, pH सेम है, एंडोटॉक्सिन लिमिट सेम है, ये तीन चीजें सेम है। डिफरेंस किसमें है? सॉलिड कंटेंट में है, पायोजन में है। Now pyrogens, so in the water for injection is need not to be pyrogen free, water for injection need not to be pyrogen free, but sterile water for injection must be pyrogen free। ये चीज याद रखो कि water for injection need not to be pyrogen free, but sterile water for injection must be pyrogen free। water for injection should not be held under room temperature। तो वाटर फॉर इंजेक्शन अगर यूज करना है तो उसको आप स्टोर नहीं कर सकते। वाटर फॉर इंजेक्शन शुड नॉट बी हेल्ड एट अ रूम टेम्परेचर मोर देन 24 आवर्स बिफोर इट इज यूज्ड, है ना। तो वाटर फॉर इंजेक्शन इमीडिएटली प्रिपेयर कर दे तो इमीडिएटली उसको यूज करना है, अदरवाइज स्टोर करके नहीं रखना है ना, बिकॉज वो नॉन स्टेराइल बन जाएगा फिर से। अगेन यू कैन सी मोनोग्राफ्स ऑफ वाटर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। वाटर मोनोग्राफ एज पर द यूएसपी, देखो यहाँ पे वाटर टाइप, प्रिपरेशन मेथड, लिमिट एंड कमेंट। देखो प्यूरिफाइड वाटर पहला है, दैट इज प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन एंड आयन एक्सचेंज, एंडोटॉक्सिन लिमिट नॉट एप्लीकेबल, इट इज यूज्ड एज अ फार्मास्यूटिकल सॉल्वेंट। अपना इंटरेस्ट है वाटर फॉर इंजेक्शन एंड स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन। water for injection prepared by distillation, reverse osmosis, so water for injection as well as sterile water for injection, they are prepared by distillation as well as reverse osmosis। important है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है प्रिपरेशन का।
एंडोटॉक्सिन लिमिट ऑलमोस्ट सेम ही है, 0.25 एंडोटॉक्सिन लिमिट पर ml. नाउ वाटर फॉर इंजेक्शन इज अ नॉन स्टेराइल. वाटर फॉर इंजेक्शन क्या होता है, नॉन स्टेराइल होता है एंड मस्ट बी यूज्ड विद इन 24 आवर्स ऑफ द प्रिपरेशन. अगर आपने वाटर फॉर इंजेक्शन प्रिपेयर किया है तो 24 आवर्स में यूज करना है, स्टेराइल नहीं होता है. एंड इफ यू वांट टू स्टोर द वाटर फॉर इंजेक्शन you have to store below 5 डिग्री सेल्सियस and more than 80 डिग्री सेल्सियस. अगर आपको स्टोर करना है तो यू कैन स्टोर बिलो द 5 डिग्री और मोर देन 80 डिग्री, है ना. एंड है ना यूज्ड फॉर टर्मिनली स्टरलाइज्ड पेरेंट्रल प्रिपरेशन. ये कंडीशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है एक बार. नाउ स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन प्रिपेयर्ड बाय सेम मेथड, डिस्टिलेशन एंड रिवर्स ऑस्मोसिस. इट इज यूज्ड फॉर सिंगल डोज कंटेनर. Sterile water for injection used for the reconstitution of sterile solid. कुछ इसमें देखो इंजेक्शन में क्या होता है, सिर्फ सॉलिड पाउडर होता है और उसके साथ में एक स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन का एक आपको एक कंटेनर दिया जाता है. आपको बिफोर इंजेक्शन तो क्या है, वो सॉलिड में उतना अमाउंट का वाटर डाल के रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है और बाद में इंजेक्ट करना पड़ता है. क्यों, उससे दो फायदे होते हैं कि रेडीमेड प्रिपरेशन अगर आता है तो उसको स्टेबिलिटी नहीं रहता है, दैट्स व्हाई. ठीक है. देन बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन प्रिपेयर्ड बाय अगेन सेम मेथड, डिस्टिलेशन रिवर्स ऑस्मोसिस. ये ऑलमोस्ट सभी जो वाटर्स है एक्सेप्ट प्यूरिफाइड वाटर, बाकी सभी वाटर जो है फार्मास्यूटिकल्स दे आर मेड बाय रिवर्स ऑस्मोसिस एंड डिस्टिलेशन. एंडोटॉक्सिन लिमिट होता है 0.5 एंडोटॉक्सिन यूनिट पर ml. तो बैक्टीरियोस्टैटिक water for injection is used for the multiple and single dose container. सेकंड होता है स्टेराइल वाटर फॉर इरिगेशन. इरिगेशन मतलब क्या, टू वॉश द बॉडीज ऑर्गन. आपके जो ऑर्गन है उसको वॉश, जैसे गैस्ट्रिक लेविगेशन और गैस्ट्रिक इरिगेशन. इसके लिए डिस्टिलेशन एंड रिवर्स ऑस्मोसिस सेम प्रोसेस, 0.25 एंडोटॉक्सिन लिमिट पर ml and should be labeled as a for irrigation only. स्टेराइल वाटर फॉर इनहेलेशन है ना, कुछ आपको इनहेल करना है इसके लिए. तो अगेन मेथड इज सेम, डिस्टिलेशन रिवर्स ऑस्मोसिस, 0.5 एंडोटॉक्सिन लिमिट पर ml एंड यू शुड है ना इज यूज्ड फॉर इनहेलेशन थेरेपी ओनली. ना सर्दी होने के बाद में आप भाप लेने जाते हो ना. वाटर फॉर hemolysis prepared by same method, distillation reverse osmosis. Endotoxin limit is 2 endotoxin unit per ml. It is a ड्रिंकिंग वाटर फॉर पेशेंट अंडरगोइंग hemolysis. जिसका ब्लड hemolysis हो रहा है उसके लिए ये ड्रिंकिंग वाटर है, वाटर फॉर hemolysis. ये पैरामीटर्स इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. नाउ एक्सिपिएंट यूज्ड इन द पेरेंट्रल प्रिपरेशन. पहला है एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव. So they are added in a multiple dose container like a vial, and they are often included in the formulation to be sterilized by marginal process or made by aseptic manipulation. तो जो वायल्स होते हैं उसमें ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है, ऐड किया जाता है. इसके ऊपर क्वेश्चन भी ऑलरेडी आ चुका है 2-3 बार. They are not added in a single dose container like ampoule or large volume parentrals. यहाँ पे लिखा है नोट, एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस आर नॉट एडेड इन लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स एंड सिंगल डोज प्रिपरेशन. देखो बेंजोइनोलियम क्लोराइड इज यूज्ड इन 0.01%, इथाइल पैराबेन 0.01 to 0.18, माइरेस्टिल गामा पिकोलिनियम क्लोराइड 0.17, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट 0.001%, प्रोपाइल पैराबेन 0.005 to 0.035. Phenol is also used as a preservative or antibacterial in a 0.065 to 0.5 concentration. ठीक है. आगे देखो solubilizer, wetting agents and emulsifier to increase the solubility for wetting to make a suspension and emulsion. ठीक है. तो solubilizer, wetting agent and emulsifiers. आपका diethylastamide in 0.01%. Dioctyl sodium sulfosuccinate in a 0.015%. Glycerin again 14 to 25%.
Polysorbate 20, 40, 80 in a 0.1 to 0.1%. Propylene glycol 0.01 to 50%. Buffers to maintain the pH, and cause a degradative reaction, क्योंकि pH change causes the degradation reaction. तो benzoic acid and sodium benzoate, तो ये point है ना, sodium citrate, sodium bicarbonate. Bulking substances, glycerin, lactose, mannitol, dextrose, sodium chloride, and a tonicity modifier. Sodium chloride is a tonicity modifier. 0.9% sodium chloride is a isotonic or isoosmotic with the blood plasma. ठीक है, याद रखना है. And this bulking agent will reduce the pain at injection site. It will reduce the pain at injection site. Suspending agent, gelatin, polyethylene glycol, cellulose वगैरह इसमें. Chelating agent है ना, to chelate the oxidizing agent is sodium integrate, disodium integrate, disodium calcium integrate. Stabilizers, creatinine and glycerin, niacinamide. Local anesthetic like benzyl alcohol and cocaine. इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है. ठीक है, चलो नेक्स्ट. एंटीऑक्सीडेंट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म क्या है. एंटीऑक्सीडेंट एंड देयर मैकेनिज्म, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी. तो एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या है? दे आर यूज्ड टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन द प्रिपरेशन. दे आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द योर ड्रग therapeutic agent liable for oxidation, particularly at accelerated condition. देखो, name of compound and concentration. तो एंटीऑक्सीडेंट क्लासेस है बहुत सारे. एक पहला क्लास है एंटीऑक्सीडेंट which act as a reducing agent. तो इसमें क्या है कि एंटीऑक्सीडेंट which act as a reducing agent, तो वो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं in place of drug. They get preferentially oxidized in place of drug. तो एग्जांपल देखो इसके, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड एंड सोडियम बाइसल्फाइड. So they are the reducing agent. They get oxidized in place of your drug. Then second class होता है antioxidant which act as a blocking agent. They block the oxidative chain reaction in which they are usually not consumed. तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है वहाँ पे वो है ना, वो चेन टर्मिनेट करते हैं, बंद कर देते हैं. तो उसमें एस्कॉर्बिक एसिड एस्टर्स, BHT मतलब ब्यूटाइल हाइड्रोक्सीटोलिन है ना, टोकोफेरॉल, विटामिन ई है ना. थर्ड क्लास होता है आपका चिलेटिंग एजेंट. चिलेटिंग एजेंट दे विल फॉर्म ए कॉम्प्लेक्सेस विद द कैटलिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन. इसके मैकेनिज्म के ऊपर क्वेश्चन आता है. मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन भी आ चुके हैं. एग्जाम्पल इज इथिलीन डायमाइन टेट्रास्टिक एसिड, EDTA. देन क्लास 4 आता है सिनर्जिस्टिक्स. क्लास 4 क्या है? सिनर्जिस्टिक. मतलब दे आर नॉट एंटीऑक्सीडेंट बट दे आर कंबाइंड विद द एंटीऑक्सीडेंट. दे इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट व्हेन दे आर कंबाइंड. एग्जाम्पल इज फॉस्फोरिक एसिड, टार्टरिक एसिड एंड साइट्रिक एसिड. Phosphoric acid, tartaric acid and citric acid. Antioxidants are very important. Antioxidants, उनके प्रॉपर्टीज, उनका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट. क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर ग्लास फॉर इवेल्युएटिंग द केमिकल रेजिस्टेंस ऑफ ग्लास. Quality control of glass, because इसमें parenteral products they are packed in a containers and mostly container made from your glass, container made from glass and plastic. So mostly for the containers, if you say containers for parenteral products, parenteral के लिए दो ही कंटेनर सुटेबल होते हैं. एक तो होता है आपका ग्लास कंटेनर, दूसरा होता है आपका प्लास्टिक कंटेनर. ठीक है, तो ग्लास से तो आपका लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल भी पहले क्लास में आता था. आजकल वो पॉली प्लास्टिक में आ रहा है. पहले तो ग्लास में ही आता था लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स. सो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर ग्लास
for evaluating the resistance of glass. The amount of alkali that is being released or leached by purified water. The amount इसमें क्या करना है, you have to check the amount of alkaline content leached from the glass by purified water under the controlled elevated temperature. मतलब क्या कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इतना अल्कलाइन कंटेंट ग्लास से रिलीज होता है, क्योंकि ग्लास है ना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, उसमें बहुत सारा कंटेंट होता है, आपने ऑलरेडी देखा है. तो देयर आर टू टेस्ट. पहला होता है, फर्स्ट वन इज वाटर अटैक टेस्ट. फर्स्ट वन इज वाटर अटैक टेस्ट एंड सेकंड वन इज अ powdered glass test. There are two tests to check the alkali leakage from the glass container. पहला होता है वाटर अटैक टेस्ट, सेकंड होता है पाउडर ग्लास टेस्ट. तो वाटर अटैक टेस्ट किसके लिए है और उसका पूरा डिटेल्स, पाउडर ग्लास टेस्ट किसके लिए होता है उसका पूरा डिटेल्स. तो वाटर अटैक टेस्ट इज परफॉर्म ऑन द होल कंटेनर. अगर पूरा कंटेनर है, अगर वायल है तो पूरा वायल लेना है, इंटैक्ट वायल. सो वाटर अटैक टेस्ट इज यूज्ड ऑन और इट इज परफॉर्म्ड ऑन अ whole container, and it is used only with the container that has been exposed to sulfur dioxide fumes under controlled humidity condition. So it is performed on a whole container, पूरा container, उसको कुछ तोड़ना वोड़ना नहीं. So water attack test is performed on a whole container. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना, and only on those container which has been exposed to sulfur dioxide. Sulfur dioxide क्या करता है, it will neutralize the surface alkali first. So it will neutralize the surface alkali first. मतलब treated saline glass जो है. So principal involve क्या है इसमें, whether the amount of alkali is leached or not in the water after subjecting a high temperature or pressure. मतलब क्या, इसमें कंटेनर में आपका वाटर फॉर इंजेक्शन भर के लेना है पूरा, है ना, वाटर फॉर इंजेक्शन भर के पूरा लेना है और उसको पैक करके ऑटोक्लेव करना है. उसके बाद में उसका अल्कली कंटेंट चेक करना है. उससे क्या है, कंटेनर्स आर फिल्ड अप टू 90, है ना, फिल्ड विद 90% ऑफ कैपेसिटी विद द वाटर दैट इज प्यूरिफाइड और स्टॉर्ड वाटर. देन containers are subjected to autoclaving at a 121 degrees Celsius for 30 minutes at a 15 psi pressure. Then उसका जो content है, decant all the liquid and take 100 ml solution and titrate against with the 0.02 normal S2 sulfur. So volume of 0.02 normal S2 sulfur required to neutralize the alkali leached from the ग्लास, है ना, उसका 0.2 ml होना चाहिए, नॉट मोर देन 2 ml. देखेंगे उसको नेक्स्ट स्लाइड में. पाउडर्ड ग्लास टेस्ट दैट इज परफॉर्म्ड ऑन अ ग्राउंड और साइज्ड ग्लास पार्टिकल. इसमें क्या है, जो कंटेनर है उसको ब्रेक करना पड़ता है, पाउडर करना पड़ता है उसका, पाउडर्ड ग्लास टेस्ट, है ना. नाउ वेदर द अमाउंट ऑफ अल्कली इज लीच्ड और नॉट in a water, whether the amount of alkali is leached or not in the water after subjecting to a high temperature pressure condition. तो 10 ग्राम पाउडर लेना है आपको ग्लास का, प्लस 15 ml उसमें प्यूरिफाइड वाटर इन अ कोनिकल ग्लास, एंड उसको कवर करके ऑटोक्लेव करना है 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट, फिर फॉर 15 psi at 30 minutes, and cool under running tap water. Add 15 ml of purified water and titrate against the same 2.02 normal S2 sulfur. Now amber color glass जो होता है to prevent the sunlight. Now amber color is used. Amber color glass is made to prevent the or to protect the product from sunlight. But it is made by adding the iron oxide. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. How amber color glass is made? By adding the iron oxide.
साइज ऑफ कंटेनर सिंगल डोज कंटेनर अगर है ना, तो वो 1 ml से लेके 1000 ml तक हो सकता है। साइज ऑफ कंटेनर 1 ml से लेके 1000 ml तक हो सकता है। मल्टी डोज कंटेनर अप टू 30 ml तक होता है, तो 30 ml। तो टाइप्स ऑफ ग्लास आपको मालूम है, देर आर 4 टाइप ऑफ ग्लास। टाइप 1 जो होता है, टाइप 2, टाइप 1 इज हाईली resistant borosilicate glass, type 2 is a treated soda lime, type 3 is a soda lime, type 4 is a non parental glass ना। क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं इसके ऊपर। तो टाइप 1 is a highly resistant borosilicate glass and for that powdered glass test is applicable। सैंपल साइज क्या लेना है आपको, all sample containers and limit for 0.02 normal is to super is a 1 ml, not more than 1 ml। Type 1 glass is used for the store of buffered to store buffered unbuffered solution and all other uses। So type 1 glass is used for the parenteral। जो ampules vials वगैरह जो होते हैं, they are made from highly resistant borosilicate glass। Type 2 glass is a treated soda lime glass। In this also water attack test is applicable। ट्रीटेड सोलर लाइन ग्लास के लिए वाटर अटैक टेस्ट एप्लीकेबल। कौन सी ग्लास के लिए कौन सा टेस्ट एप्लीकेबल है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। यहाँ पे नंबर ऑफ कंटेनर 100 और लेस इफ इट इज मोर देन 100। अगर बैच हम मोर देन 100 कंटेनर है तो कम लेना है, 100 तो 0.7 ml। यूज फॉर ड्राई पाउडर ओलियाजिनस मतलब ऑयली सॉल्यूशंस, बफर्ड एक्वियस सॉल्यूशंस लेस देन 7 pH। ये भी किसके लिए यूज करते हैं, एम्पूल्स एंड वाइल्स। टाइप 1 टाइप 2 दे आर यूज्ड इन द पेरेंटल्स। टाइप 3 सोडा लाइम ग्लास, इसमें पाउडर्ड ग्लास टेस्ट होता है ना। ऑयल कंटेनर लेना है, 8.5 लिमिट है, 0.02 नॉर्मल इज टू सुपर का। इट इज यूज फॉर ड्राई पाउडर्स एंड सॉल्यूशंस। टाइप 4 ग्लास नॉन पेरेंटल होता है, also known as general purpose soda lime glass। इसमें पाउडर ग्लास टेस्ट एप्लीकेबल है, 50 ml 15 ml limit of 0.02 normal is to support and it is a non-parental glass used for the tablet container, oral solutions, suspension, ointment, external liquid preparations। ये जो ग्लास है, टाइप ऑफ ग्लास, वहाँ पे जो आपने ये टेस्ट देखे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है यहाँ पे जीपैट में, ठीक है। नाउ रबर क्लोजर, तो देखो रबर क्लोजर व्हाई दे आर यूज्ड, दे आर यूज्ड टू क्लोज द वाइल्स, दे आर यूज्ड टू क्लोज द वाइल्स, दे आर यूज्ड टू सील द ओपनिंग ऑफ कार्ट्रिज, और है ना, इसमें नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर यूज कर सकते हैं। सल्फर इज यूज्ड एज अ वल्कनाइजिंग एजेंट, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। वल्कनाइजिंग एजेंट मतलब क्या है, टू मेक अ हार्ड रबर फ्रॉम सॉफ्ट रबर, दैट इज अ वल्कनाइजेशन प्रोसेस देयर। देन टू मार्क अप टू बेंजथाइजोल इज अ एक्सेलरेटर, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। जिंक इज यूज्ड एज अ एक्टिवेटर। कार्बन ब्लैक इज और limestone is used as a filler or color. Antioxidant lubricant are also added in the rubber। तो इन द प्रोसेसिंग ऑफ रबर, नेचुरली जो रबर आता है वो सॉफ्ट होता है, इलास्टिक होता है, लेकिन सॉफ्ट होता है, स्ट्रेंथ नहीं होता उसका। टू अल्टर द प्रॉपर्टीज ऑफ रबर वी आर डूइंग वल्कनाइजेशन प्रोसेस। वल्कनाइजेशन मतलब क्या है, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिंकिंग ऑफ रबर मॉलिक्यूल्स इन द पॉलीमर, ठीक है। So for that you are using sulfur known as a vulcanizing agent, and up to mark of benzoyl is an accelerator, zinc is an activator, carbon black is a color, है ना। बाकी एंटीऑक्सीडेंट लुब्रिकेंट्स आर आल्सो एडेड। ऑलरेडी ये हो चुका है आपका, है ना। टू जनरल इनकॉम्पेटिबिलिटी प्रॉब्लम्स आर देयर, टू जनरल इनकॉम्पेटिबिलिटी प्रॉब्लम्स आर देयर विद रबर क्लोजर। पहला क्या है, लीचिंग द रबर इंग्रेडिएंट्स, लीचिंग द इंग्रेडिएंट on the rubber compound and subsequent reaction with the product ingredient। दूसरा होता है removal of ingredient from the product by sorption by rubber।
कंपाउंड और बाय वेपर ट्रांसफर थ्रू क्लोजर, ये इनकॉम्पेटिबल प्रॉब्लम है. रबर क्लोजर्स यूजुअली washed and mechanically washed with the mechanicalization in a tank with a hot detergent solution such as 0.5% sodium pyrophosphate and then rinse with the water for injection. रबर क्लोजर जो है पहले उसको वॉश करना पड़ता है. यू हैव टू वॉश विद 0.5% sodium pyrophosphate as a detergent solution and then again you have to rinse and then you have to use. Then administration devices है ना, इंट्रावेनस के लिए, इंट्रावेनस इंजेक्शन के लिए या फिर आपका आईवी फ्लूइड एडमिशन के लिए यहाँ पे आईवी सेट लगता है, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन सेट. इंट्रावेनस इन्फ्यूजन सेट इंजेक्शन के लिए आपको नीडल लगता है. तो एडमिनिस्ट्रेशन सेट फॉर लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स एलपीज, hypodermic needles, syringes, plastic irrigation solution bottle, plastic large volume parenteral containers, transport sets and transfer needles. They are made from stainless steel and plastic and rubber. Nylon and silicone rubber are used for intravenous catheter. Nylon and silicone rubber are used for the IV catheter. Stainless steel used for the hypodermic needle. Sometimes aluminum is used as a hub or cannula of needle. प्लास्टिक कंटेनर में क्या है कि एक्सेप्ट लो डेंसिटी प्लास्टिक है ना, लो डेंसिटी पॉलीथिलीन और पॉलीप्रोपिलीन, सॉरी लो डेंसिटी पॉलीथिलीन और पॉलीस्टाइरीन दैट कैन बी ऑटोक्लेव्ड, बट बाकी ऑटोक्लेव नहीं कर सकती है ना. हैव बीन formulated with a low amount of plasticizer. जो low density plastic है, that is formulated with a low amount of plasticizer. Polyethylene, polypropylene है ना, they are mostly used. Out of that, polypropylene is mostly used. Has a high melting range, 165 degrees, relatively less permeability for the gases and water vapors, and can withstand with the normal autoclaving temperature. Normally plastic autoclave में नहीं टिक सकता, लेकिन ये टिकता है. Flexible polyethylene containers for ophthalmic solution. Flexible polyvinyl chloride bags are also available for intravenous solution. तो ये प्लास्टिक के कुछ है, दो टाइप के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक इसमें होता है तो है ना, यहाँ पे डेंसिटी ऑटोक्लेवेबिलिटी दिया है. तो पॉलीइथिलीन अपलो डेंसिटी ऑटोक्लेवेबल है क्या ना, वो हाई डेंसिटी यस ना, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन हाई डेंसिटी, पॉलीप्रोपिलीन हाई डेंसिटी, both are autoclavable. Okay, then polyvinyl chloride autoclavable cautiously. ठीक है, rigid polycarbonate autoclavable, polystyrene no. टेट्राफ्लोरोइथिलीन, टेफ्लॉन क्या है, टेट्राफ्लोरोइथिलीन ऑटोक्लेवेबल है. पोरोलाइन ग्लास जो है तो ऑटोक्लेवेबल है. बोरोसिलिकेट ग्लास ऑब्वियसली ऑटोक्लेवेबल है. रबर है ना, ऑल ब्यूटाइल न्यूट्रल है ना, ब्यूटाइल नेचुरल न्यूप्रीन पॉली आइसोप्रीन सिलिकॉन रबर, ये सब क्या है ऑटोक्लेवेबल है, मतलब दे कैन विथस्टैंड विद द प्रेशर टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ ऑटोक्लेव. पायरोजन टेस्ट फॉर पैरेंट्रल प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है आपका. पैरेंट्रल प्रिपरेशन मस्ट बी पायरोजन फ्री, और आपको समझ में कैसे आएगा. सो फॉर दैट पायरोजन टेस्ट इज डन. मेजरमेंट ऑफ इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए rabbits. So there are two tests for to check the पायरोजन. पायरोजन के लिए दो टेस्ट होता है, एक होता है इन विवो टेस्ट. इन विवो मतलब इन द बायोलॉजिकल सिस्टम, इन विवो टेस्ट मतलब इन द बायोलॉजिकल, known as a in vivo pyrogen test, known as a rabbit test, also known as a sham test, also known as a sham test. तो इसका सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट है. तो टेस्ट कैसे करते हैं, मेजरमेंट ऑफ इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर आफ्टर इंजेक्टिंग योर solution under test into the rabbits
via marginal vein not exceeding at an interval of 4 minutes. तो जो रैबिट का ईयर का पिन्ना होता है वहां से जो मार्जिनल वेन होता है उसमें आपका सॉल्यूशन इंजेक्ट करना है। एंड कब, पहले तो उसका रैबिट सिलेक्ट करना है आपको, 4 रैबिट सिलेक्ट करने के बाद में उसका टेम्परेचर लेना है। टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होना नहीं चाहिए उनमें, तो उनका टेम्परेचर डिफरेंस भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो रैबिट सिलेक्ट करना है आपको टेस्ट के लिए, ठीक है। बाद में उनका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है आपको। लाऊं बघना ते लाइट क्या लगता है आई इधर है। Injection volume should be 0.5 ml, not less than 0.5 ml, not more than 10 ml per kg. Injection volume should be not less than 0.5 ml, not more than 10 ml per kg. Varies with the testing solution. You know, record the body temperature every 30 minutes up to 3 hours. The injection for the 3 rabbits. The difference between initial and maximum temperature is recorded between the rabbits and taken as a response. Then in vitro एक टेस्ट होता है, that is known as the लाल टेस्ट, डिमोलस अमीबोसाइट लाइसेट टेस्ट। लाल टेस्ट डिमोलस अमीबोसाइट लाइसेट इन विट्रो पैराजन टेस्ट है। क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, इन विट्रो पैराजन टेस्ट, लाल टेस्ट, इन विट्रो पैराजन टेस्ट, और आल्सो नोन एज एंडोटॉक्सिन मॉनिटरिंग, एंडोटॉक्सिन मॉनिटरिंग। तो test for detection of endotoxin that is based upon the clotting reaction of horseshoe crab lysate and endotoxin। तो ये horseshoe crab एक टाइप का फिश और यू कैन से क्रैब होता है, इसके ऊपर एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं लाइसेट, क्रैब लाइसेट। डिमोलस अमीबोसाइट लाइसेट टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ endotoxin that is based upon the clotting reaction of horseshoe crab lysate and endotoxin। यहाँ पे क्या है कि जो भी आपका टेस्टिंग सोल्यूशन है, स्पेसिमेन इज इनक्यूबेटेड विद द डिमोलस अमीबोसाइट लाइसेट टू चेक द सेंसिटिविटी। अगर वहाँ पे क्लॉटिंग या जेल फॉर्मेशन होता है, दैट विल गिव यू पॉजिटिव एंडोटॉक्सिन टेस्ट। इफ देयर इज अ क्लॉटिंग और जेल फॉर्मेशन, दैट विल गिव यू positive endotoxin test। तो amoebocyte lysate, Dimolus amoebocyte lysate, so that is taken and the specimen under test or solution under test is incubated with the that, and if there is a formation of gel clotting, that will give you positive test। high sensitive test होता है, highly sensitive होता है 0.05 endotoxin unit per ml। पर ड्रॉबैक इसका है, डिसएडवांटेज इसका है, इट कैन गिव फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट विद द ग्लूकान। टाइप्स ऑफ लाल टेस्ट, तो इक्विपमेंट यूज फॉर टेस्ट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एंडोटॉक्सिन। डिफरेंट लाल टेस्ट मेथड क्या है, एक जेल क्लॉट मेथड होता है, दूसरा टर्बिडीमेट्रिक मेथड होता है, तीसरा कलोरीमेट्रिक मेथड होता है, और क्रोमोजेनिक मेथड, ठीक है। ह्यूमन होल प्लाज्मा टेस्ट, ह्यूमन होल ब्लड टेस्ट, और एक टेस्ट है ह्यूमन होल ब्लड टेस्ट। पैरोजेंस इंक्लूड्स ह्यूमन, है ना। पैरोजेंस इंड्यूसेस द, पैरोजेंस क्या होते हैं, दीज आर द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ बैक्टीरिया, मोस्टली लिपोपॉलीसैकेराइड होते हैं, और ये प्रोटीन भी हो सकते हैं, एंड दे कॉजेज द इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर, है ना। तो पैरोजेंस इंड्यूस द ह्यूमन
monocyte to release the inflammatory substance like a interleukin and cytokinins. पायरोजन्स क्या करते हैं, तो आपका जो मोनोसाइट्स होता है सेल्स, उनको इंफ्लेमेटरी सब्सटेंस हिस्टामाइन है ना, हिस्टामाइंस वगैरह रिलीज करने के लिए बोलते हैं, हिस्टामाइन, इंटरलूकिन, साइटोकाइनिन्स. द टेस्ट इन्वॉल्व्स incubation of whole blood for culture line of human blood and analysis of specific cytokines after the Esic time. तो एनालिसिस ऑफ साइटोकाइनिन एक टेस्ट आता है, एडवांस टेस्ट, उसको बोलते हैं एंडोलिसा. फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल सॉलिड फेज बेस्ड मेथड एंडोटॉक्सिन डिटेक्शन. सॉलिड फेज बेस्ड मेथड ऑफ एंडोटॉक्सिन डिटेक्शन commercially first available. Use of recombinant factor C with the fluorogenic substance for the detection of endotoxin. पायरोजन टेस्ट कुछ ऐसा करते हैं, 3 रैबिट्स आर सिलेक्टेड, आपका सॉल्यूशन उसमें इंजेक्ट करना है एंड एवरी 30 मिनट आपको 3 आवर्स तक टेम्परेचर मेजर करना है. अगर टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर और टेम्परेचर आफ्टर इंजेक्टिंग डिफरेंस नहीं आता है ना, अगर डिफरेंस इज नॉट मोर देन 0.5 डिग्री सेल्सियस, सो योर सैंपल पासेज द पायरोजन टेस्ट. एंड ये डिफरेंस इज देयर, अगर वो टेम्परेचर बढ़ता है तो दैट मीन्स देयर आर पायरोजन्स इन योर सॉल्यूशन. ठीक है, तो टुमारो लेक्चर में भी अगेन 2 टाइम्स, एक मॉर्निंग में भी लूंगा मैं लेक्चर और इवनिंग में भी. ठीक है, यू विल सी द रिमेनिंग पॉइंट्स टुमारो. ये चैप्टर बहुत बड़ा है,